Okay. Okay. Today's class will be conducted by these girls. मैं आपका कौन कौन है बताना जरा. अनुष्का. मैम अनुष्का, प्रियांशी, एक स्नेहा, मिनट एक मिनट टिया। अनुष्का एक मिनट. अनुष्का. अनुष्का, हाँ. प्रियांशी, स्नेहा, रुक टिया, जाओ रुक जाओ मैं प्रियांशी लिखूँ. प्रियांशी. देन स्नेहा, स्नेहा. स्नेहा. यस हाँ मैम, देन. टिया ये ओके. एंड एंड रौम्या। स्टार्ट करो. स्टार्ट. मैम एक पीपीटी बनाया है, उसमें जो भी सिंपल कराया आप लैंग्वेज में शुरू उसकी समरी लिखी है करो. थोड़ी बहुत। लेट मी सी फर्स्ट. मैम इज द स्क्रीन विजिबल? यस इट इज विजिबल क्लियरली. मैं इसमें से अभी आप चारों का भी टेस्ट भी लेना है. ओरल टेस्ट. Yes, ma'am. Om Shri Sai Ram. Today we are going to explain a short summary of the age of industrialization, the first part introduction and the second part before the industrial But revolution. this is your teaching. Okay. पहले before you start, let us give the assignment to another boys. 5 boys, please raise your distinct hands. Yeah. उसका नहीं होगा. Boys, I want the name. मजाक नहीं कर रही हूँ मैं. मैम हर्षित जैन. मैम अभिषेक भार्गव. एक मिनट मैम रुक शुभम जाओ. भार्गव. एक मिनट रुको. हर्षित जैन. देन अभिषेक भार्गव. मैम शुभम भार्गव. मैम अभिषेक. एक मिनट रुकिए. अभिषेक भार्गव. देन हु मैम एल्स. शुभम अभिषेक भार्गव. भार्गव. मैम शमित राय बोले. मैम एक शुभम. मिनट. हर्षित जैन अभिषेक भार्गव. देन समित अभी नहीं बोलना. इसके पहले मैम चारू। मैम चारू शुभम. तुम बॉय हो. मैम शुभम भार्गव. नेक्स्ट बॉय कौन है. श्रमित. मैम वीरांश. अरे श्रमित का नाम लिखूं पहले. श्रमित बोला है. एक बात बताओ. तुम्हारा लड़ाई तो नहीं होगी. 1 2 3 4. एक और कौन है. विरांश. मैम वीरांश. कैसे दूर दूर तुम लोग कॉन्टेक्ट करोगे. ठीक है. अभी ये दोनों का एक बॉयज का भी गर्ल्स का भी हो रहा है. चलो बोलो. और शुरू करो उसका. यस मैम कर रहे हैं. गर्ल्स एक अनदर 5 का. चारू तुम ग्रुप बनाओ तुम्हारे जिनके साथ तुम करना चाहते हो. यस चलो. Om Shri Sai Ram. Today we are going to explain a short summary of the age of industrialization, first part introduction and the second part before the industrial revolution. बट क्लास में एक्सप्लेन भी करोगे है ना उसका. यस मैम. मैम ये शॉर्ट समरी है, इसी के थ्रू हो जाएगा. बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है. नहीं ठीक है. तुम लिखा तो सही पर नहीं एक्सप्लेन करना. ओरल ओरल का मन को देखना है. चलो. Priyanshi, hand it over to you. Thank you, Anushka. So, we are going to start with the introduction of the chapter, that is, with two prints. The first print was the explanation of the first print is like this. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, created a music book that had a picture on cover page announcing the dawn of the century. At the center of the picture
is the angel of progress bearing a flag of new century gently perched on a wheel with wings symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Behind her are the signs of progress. So, so as you can see in the picture, there is this angel or goddess-like figure which is referred to as angel of progress. And she is bearing a flag. One minute. Priyansi and all the girls. The presentation will be such that it will help you in the. I am helping you out for the Google form. Yes. Okay, I am helping you out by asking you, doing the oral test from history from this chapter. Now I will be taking test on history, all the books. हिस्ट्री में मैंने कितना लिखा था मैं सब गड़बड़ कर दिया. हिस्ट्री में लिखा था योर टोटल 10 मार्क्स. ओके, ये अच्छा हो जाएगा, रेपुटेशन बुरा भी नहीं होगा हमारा. तुम्हारा हिस्ट्री में है 2 मार्क्स ओरल में, इसमें तो कोई मार्क नहीं है तो तुम पढ़ रहे हैं. और ज्योग्राफी में 3 मार्क्स एंड डीपी में 2 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स. 2 3 पाउंड नहीं, इकोनॉमिक्स में 3 मार्क्स. 3 मार्क्स. यस, it is okay. Yes, ma'am. All of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स में 3 मार्क्स का है ना? इकोनॉमिक्स मुझे इसके बाद बारे में इसके बाद में कोई नहीं पूछेगा. हिस्ट्री 2 मार्क्स, ज्योग्राफी 3 मार्क्स, डीपी 2 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 3 मार्क्स. तुम्हारा एंटायर प्रेजेंटेशन पीपीटी जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर है, तो तुम्हारा माथा क्लियर है. ठीक है, so I'll be asking question. So it is, I'm only going to help you there that in this. So presentation is चलो प्रियंशी, चलो हो रहा है तुम्हारा. इसमें तो मार्क नहीं दूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी तो ही मार्क दूंगी. स्टार्ट बेटा, जो भी कर रहा है. Ma'am. देखो अनुष्का, हाथ please. खोल लिया करके, तुम लोग पीपीटी में हाथ खोल लिया करके तुम कितना बढ़िया ये भी कर दे रहे हो पीपीटी. Impressed. 100 years, let us now start looking at the second picture. 100 years ago, the praise of machines appeared in another picture. It shows 2 magicians. One at the top is Aladdin from Orient, who built a palace with his magic lamp representing the East and the past. The other at the bottom is the modern mechanic with his modern tools weaves a new magic representing West and modernity. Hence, the modern world is associated with the rapid change and innovation. So you can see here the picture of 2 magicians. So let us start with the first topic, before the Industrial Revolution. The history of industrialization. in this PPT. नाम डाला अपना. Yes, ma'am. 5 लोगों का नाम डाला. Yes, ma'am. डाला है. Okay, everybody, those who are going to present, they must put their names in this group. चलो. History of industrialization very often begins with the setting of the first factory. But even before factories began to dot the landscape, there were large-scale production for an international market, which was not based on industry. Many historians refer this phase as proto-industrialization. As Priyanshi told, the proto-industrial. Anushka, Yes, ma'am. is it possible for you people asking questions and giving answers by each other? Yes, ma'am. Try to do that because you are teaching each other. Okay, ma'am. No. As Priyanshi told about the proto-industrialization, where the factories were not set up, but still industrialization was there. So I am going to tell about how was that industrialization. In the 17th and 18th centuries, merchants used to work in the towns.
With the expansion of world trade, they also thought of expanding their business. They first thought of moving to the cities, but there the big traders had restricted the new entries in trade. So they set up their businesses in the countryside. Now let's see how it went in the countryside. In the countryside, poor peasants and artisans began working for the merchants. As we have read in previous classes, at this time these peasants, etc., were in a huge loss, but working for the merchants helped them a lot. Now, how did their Are you processing? doing it before industrial revolution? Yes, ma'am. Okay. Now let's see how this process went like. Let's take example of textiles. All the work from stapling to dyeing was done in the countryside and then the finishing work was done in London. London, in fact, came to be known as the finishing center. Thus, there became a relation between the towns and the countryside. अच्छा फाइन कहाँ से आप पढ़ रहे हो? Ma'am, here in the presentation, I am showing it. नहीं मतलब बुक से कौन सी पोर्शन से लिया आपने? ये मैम बुक में पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद ऐसे फर्स्ट पार्ट करके दिया है ना, तो उसके हम एक शॉर्ट समरी बना के प्रेजेंट कर रहे हैं. बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. यस मैम. मैम 1.1 द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री जो है उसके ऊपर है ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रही हूँ. 1.1 कहाँ है? मैम कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री. मैम पेज 105. अच्छा यहाँ पढ़ रहे हो तुम, चलो. Thus, there became a relation between the towns and the countryside as the merchants bought the wool from the town, then it went to the countryside for all the manufacturing, and the finishing work was done in London. All the processing were done by merchants and other workers. At each stage, almost 20 to 25 workers were employed. This meant that each clothier was controlling hundreds of workers. Now, here we can see, here are so many workers working for the same work and creating a same good for production of the same thing. So this is called an industry. But here, there is no factory used. They are doing on their own levels. Now hand it over to Sneha. Now we will study the next topic, the coming up of the factory. The earliest factories in England came up by the 1730s. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century, which was linked to a number of changes within the process of production. A series of inventions in the 18th century increased the efficiency of each step of the production process. Richard Arkwright created the cotton mill. The costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. When all the processes were brought together under one roof and management, it allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor. In the early 19th century, factories increasingly... तुम्हारा voice is clear. नेहा, Yes, ma'am. अभी yes ma'am तो clear था. उसके पहले no madam था. वापस से पढ़ूं? नहीं पढ़, आगे से नहीं पढ़ना है, जहाँ से पढ़े उनके साथ पढ़ो. In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. Now hand it over to Ramya. Now let us try to learn the pace of industrial change. The question which arises is, how rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First, most of active industries in Britain were clearly cotton and metals.
Iron and steel industries followed the textile industry and grew rapidly with the expansion of railways. In 1873, Britain exported iron and steel worth 77 million pounds, double the value of its cotton export. Second, displacement of traditional industries was not easy. At the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically industrial sector. Thus, most of the workforce was engaged in traditional industries. Third, traditional industries too had development. They were not stagnant. Ordinary and small innovations were seen, like food processing, building, pottery, glasswork, furniture making, etc. Fourth, technological changes occurred slowly because the new technology was expensive and industrialists were cautious about using it. Now handed over to Tia. Now, let's examine the case of steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could find no buyers. Century, there were no more than 321 steam engines all over the world. Of these, 80 were in cotton industries, 9 in wool industries, and the rest in mining, canal works, and iron works. Steam engines were not used in any of other industries till much later in the century. So, even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists. Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborer. हो गया? No, ma'am. Okay. Anushka? कहाँ गई अनुष्का? Anushka, next Anushka? slide, please. अनुष्का फ्रीज हो गई, फ्रीज नेट गया से. Anushka. शायद नेट नहीं, दिस इज फ्रीज, दिस इज नॉट देयर. मतलब उसको फ्री, वो तो है नेट गया शायद. अनुष्का, अनुष्का बस इज लाइव. पता नहीं लाइट चली गई क्या हुआ. आ गई अभी तेरे. देखना उसको पर्सनली फोन करके देखो. Yes, the whole class is frozen. क्या हो गया बेटा? हुआ क्या? Out of 30, Priyansi, what's wrong? Ma'am, I'm calling. हाँ, क्या हुआ देखो?
Okay, we will start just read and explain. Read करो, पहले से read करो. मैम कहाँ से? From the very beginning. First Of the page से पढ़ो chapter. और explain करो then बेटा. Just your class में you are taking the class. You are the teacher today. प्रियांशी, अनुष्का, then कौन था? अनुष्का के बाद कौन था? स्नेहा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do not make any PPT and all. एक हो गया, बहुत अच्छा है. बाकी ऐसे क्लास में पैराग्राफ वही समझाओ, जैसे अभी यस इज गोइंग टू डू यस. Yes, ma'am. The Yes, age of ma'am. the age of industrialization. From the very beginning he is doing. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. As you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure, Anushka, the what's angel of wrong? Where process. did you go? Yes, Anushka, Ma'am, the net suddenly stopped and it got disconnected. अभी तुम्हारा है, बाकी है. Yes, ma'am, the word meanings were left. You do this, then yes will do. Yes, in the meantime you थोड़ा read by yourself. Okay, ma'am. अपने आप पढ़ लो और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो. चलो तुम अनुष्का फिनिश इट. यस, यू जस्ट रीड करो और अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो अपने अंदर. मैम फर्स्ट पैराग्राफ में तो जस्ट पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मैम उसमें तो Hey, it's wherever it is, you have to continue. ओके मैम. Now, let's see the word meanings came in the topics we have explained. First, Orient. The countries to the east of the Mediterranean, usually referring to Asia. The term arises out of a Western viewpoint that sees this region as pre-modern, traditional, and mysterious. Triumphant. This is a feeling or showing great happiness because you have won or succeeded at something. Acquisition. The act of obtaining or buying something. Proto is indicating the first or early form of something. Guilds, an organization of people who do the same job or who have the same interest or aims. Fifth, stapler, a person who staples or sorts wool according to its fiber. Next, fuller. Fuller is a person who fulls, that is, gathers cloth by pleating. Carding is the process in which fibers such as cotton or wool are prepared prior to spinning. Efficacy, the ability of something like a drug or a medical treatment to bring about the results that are wanted. Next is monopoly, a market structure characterized by a single seller selling a unique product in the market. In the monopoly market, the seller faces no competition as he is the sole seller of goods with no close substitute. He enjoys the power of setting the price for his goods. Stagnant means not flowing and therefore dirty and having an unpleasant smell. This is usually used about water. Thank you, and Sarah. Who was that doing? Tia. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. You have completed? Yes, ma'am. Anushka? Yes, ma'am. We have done. Okay, yes. Yes, ma'am. It is to you. The dawn of the century. In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover announcing the dawn of the century. Yes, Ma'am, ma'am. Ramya. Romya, then? Ma'am, then Tia. Okay.
As Okay, you go can on, see, go on. as you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure, the angel of progress, bearing the flag of the new century. She is gently pursued on a wheel with wings, symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Floating about behind her are the signs of progress, railway, camera, machine, printing press, and factories. Now you see the figure, see the picture. In its at the center, there is a goddess-like figure. She's holding You a explain, flag. you are a teacher. Yes, the approach is different for everyone. Yes, ma'am. She's holding a flag in her hand. It is given that it is symbolizing the flag of new century. Means a new century means uh, new century, and It will get clarity to you, flag you of her. will understand well, you will do well. I understood, but I am not घबराओ able to. नहीं, आप किसी बुक के वर्ड को इन लोगों ने क्या करा? They only repeated what is written by doing a presentation. The Yes, same ma'am. thing you do, but try to explain wherever you feel like. Yes, ma'am. Uh, in the picture, the lady is standing on a wheel with wings. It is referring to the time. By standing on it, she is moving from one century to the other, and at back of her, it's the century which has passed, and it is showing the symbols of progress in that century, like railway, camera, machines, printing press, and factories. This much is given in this paragraph. Yes, ma'am. थोड़ा सा आगे चलो, इसके बाद कौन है? हर्षित जैन। Over to Hर्षित जैन। Don't waste time. Ma'am, he is not there. कौन? Ma'am, Harshit is not there. अभी तो हर्षित जैन चिल्ला रहा था, तुम करो। शुभम, Yes, ma'am. how is it that some children are always in the front and many children are at the back? Soumya, you are here. अरे आप पढ़ने आते हो, 10th क्लास में बैठे हो, आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसी एक ही चैप्टर में तुम लोग पढ़ रहे हो, समझा रहे हो। ये शुभम तुम स्टार्ट करो। Yes, ma'am. मैंने यहाँ Second paragraph. लड़कियों का नाम पूछ रही थी ना। आई एम मेकिंग 2 क्वेश्चंस फॉर एवरीवन, सो दैट उनका 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का तो क्लियर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? आज नहीं वो कल हो जाएगा। Ma'am, may I start? Yes. Yes, ma'am. Second paragraph. This glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of trade magazines over 100 years ago. It shows two magicians. The one at the top is Aladdin from the Orient, who built a beautiful place with his magic lamp. Here, Orient means the countries to the east of the Mediterranean, usually referring to Asia. The term arises out of a Western viewpoint that sees this region as pre-modern, traditional, and mysterious. The one at the bottom is the modern mechanic, who with his modern tools waves a new magic, builds bridges, ships, towers, and high-rise buildings. Aladdin is shown as representing the East and the past. The mechanic stands for the West and the modernity. So in the figure number 2, at the top of at the top, it shows Aladdin. It is showing that Aladdin with his magic lamp is making a new city, which is which is more developed. And at the bottom, there is a mechanic who is using his modern tools for inventing more things and making more and for development. For example,
He's using his tools for making buildings, bridges, ships, and high rise and towers. Yeah. So the figure number 2 is explained in this paragraph. हम्म, हो गया तुम्हारा इतना Yes, ma'am. जल्दी? मैं पूरा 40 मिनट्स पढ़ाती हूँ, तुमने 40 मिनट्स में 5 और 2 7 लोग पढ़ा दिया और दोरी यार, बड़ा फास्ट कराते हो कोर्स तुम लोग तो है। हर्षित जन नहीं आया अभी, प्रिया पढ़ा इसके बाद, मैं अकेले बंदा Yes, ma'am. क्या है ये? Now let us study the third paragraph. These images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated. क्वेश्चन कैसे बनाती हूँ यू नो, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। सो मैंने अभी 10 क्वेश्चंस बनाए जो आप गर्ल्स के लिए, क्योंकि 5 गर्ल्स 2 क्वेश्चंस ईच, तो मैंने 10 क्वेश्चंस बना दिए। तो यू सी कैसे बाल की खाल निकालती हूँ, ऐसे बाल की खाल निकाल के पढ़ा। Yes, ma'am. एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा, तुम तो चैप्टर भी खत्म कर दिया यार। बड़े फास्ट। Yes, ma'am. These images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovation, machines and factories, railway and steamships. The history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as as a wonderful time for the technological process. मतलब इन दो फोटो से हमें ये पता चल रहा है कि ये वर्ल्ड कितना मॉडर्न हो चुका है और कितना भी होने वाला है। और इसके बाद और इसमें ये भी दिखा रहा है कि इसमें जो है मॉडर्नाइजेशन कितना जल्दी हुआ है और उसमें क्या क्या नया आएगा, जैसे कि मशीन्स आएंगी। Sorry. In these two images, we can see that how the world has changed and how it will be changed. For example, in the new world, there would be new railways, machines, factories, and many other steamships, and the history of industrialization is simply like a story, and we could understand that it's just a story of industrialization, that how the world changed and how the world will change, and it will appear to be a wonderful technological process, that how the technology was revolutionary, that how the technology was progressed. यस, कोई बात नहीं बेटा, जीव को काटने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही करते करते इंसान सीखते हैं, कोई एक दिन में सीख नहीं जाता। लुक एट माई एज एंड लुक एट माई एक्सपीरियंस एंड लुक एट योर एज एंड एक्सपीरियंस, इट कांट बी सेम ना। तो मैं तो खाली बोला हाउ फास्ट यू कैन डू। नेक्स्ट कौन है लड़कियों में? चारू, एक्सप्लेन करो, चलो। चारू, आर यू देयर इन द क्लास? मैम बोलो, चलो, जहां से थोड़ा श्रेया ने मैम वहीं से पढ़ा। जब तक करोगे नहीं तो कुछ सीखोगे नहीं, मिस्टेक तो इसमें तो मार्किंग नहीं है, ओनली थिंग इज दैट यू विल बी। मैम अनुष्का कुछ बोल रही है। बोलो मैम, ये वाले जो पार्ट्स हैं मैम, ये समरी में हम लोगों ने बताया, तो हम लोग ही एक्सप्लेन कर दें इसे वापस से। बाद में करेंगे, अभी पहले नए बच्चों को चांस ताकि उनको इंटरेस्ट भी आए, पीछे ही बैठे हैं तो चल ओके चलो मैम, लेकिन कर देना। और अभी तो तुम पढ़ाई करके उतना तैयारी करो। कहाँ तक बताऊं? यहाँ तक, पेज नंबर 105। यू 5 गर्ल्स, तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चन रेडी है, बाकी मैं अभी बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन बना रही हूँ। हाँ भाई, क्या है बताओ? चारों क्लास रेडी कि नहीं? मैम वो बोल रही है कि वो बोल रही है पर उसकी आवाज नहीं आ रही। वो बैठी है दिल्ली में, तो कैसे मैं क्या करूँ?
मैम Who else is there? लड़कों का नाम बताओ तो. सौम्या है, सौम्या पढ़ा रही क्या? Yes, लड़कों में कौन है? Who are the among the boys? Yes, boys. मैम रमेश कहाँ गया? हाँ बोलो. मैम मुझे ये पूछना था कि आप जो क्वेश्चंस है हाँ वो आप ओरली पूछेंगे या फिर गूगल फॉर्म? नहीं ओरली गूगल फॉर्म में तो टेस्ट होगा. ये ओरल टेस्ट ले रही हूँ so that you should be well versed with the chapter. मैम कभी पूछेंगे आप? अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, कल भी पूछूंगी. ओके मैम. Why not? ताकि आपको well versed हो जाएगा. पढ़ के इसी चैप्टर में हिस्ट्री कर लूंगी मैं. यस मैम. क्लियर हो गया आपको? यस मैम. ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है. मुझे बच्चों ने पिछले साल बताया, इस बार चेंज कर सकते थे पर ठीक है, अब चल रहा है. ओके, लेट मी. Ma'am, I had a doubt from this line. Yes. It says Aladdin is shown as representing East and the past, and the mechanic stands for the West and modernity. Why they have shown the directions East and West? ईस्ट मतलब अलादीन कहाँ की है? मिडिल ईस्ट का है, अरब कंट्रीज का है ना. अरब इज इन द एशियन कंट्री. एशिया इज इन द ईस्ट. अंडरस्टूड? Okay, ma'am. Okay. एंड देन द लोअर जो नीचे बैठा है, जो मशीन में बैठा है, वो वेस्टर्न का है. तुम एक चीज तुम लोगों ने नोट नहीं किया शायद. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. आ जाओ 105 चैप्टर में. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 1 to 3rd पैराग्राफ है, कह रहा है. नहीं, सेकंड पैराग्राफ. देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज. Even before factories began to dot means दिखाई दिया, dot the landscape of Europe, in England and Europe. Can you see this paragraph? छोटा पैराग्राफ है. मैम पेज नंबर क्या बोला? 105. 105. Second paragraph देखो. There is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape. Dot the मतलब जैसे डॉट देने से हमको दिखाई देते सेपरेटली. एक प्लेन पेज है, कुछ नहीं था, उसमें हम डॉट लगा देंगे, दिखेगा हमको? Yes, दिखेगा ma'am. कि नहीं? ध्यान मेरे तरफ करेंगे तो फेल हो जाओगे तुम. इसकी तैयारी जबरदस्त करो इसको, क्योंकि तुमको कुछ पढ़ना नहीं. पीपीटी के बाद इसको यही एक चैप्टर पढ़ना है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. गूगल Yes, ma'am. तो इसीलिए मेरी बात. स्नेहा तुमको मिला है सेंटेंस? ओके. लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप. इंग्लैंड में पहले शुरू हुआ था ये, मैनचेस्टर में फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देयर वाज अ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. There was a large scale production. It means before industry came to the scene, there were factories. ये कह रहा है, ये पूरी इतना सारा हो गया तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति आ गया इसमें. But there were factories, there were productions took place before industrial revolution began. There was a large scale industrial production for an international market. यहाँ कॉमा है यूरोप के बाद. आपको दिख रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was यहाँ पे देखो, there is a problem with such ideas. Even before factories began to, इसका लिंक ऊपर है. There is a problem with such ideas. मैं इतने टाइम में ये सब पढ़ रही थी मैं. All too often we often associated industrialization with the growth of factory industry. जब मैं पानी बोलूँ, I will tell you one word, water. What imagination comes to your mind? A glass of water, bucket of water है, और पानी तो नल से आ रहा है, ये बोलोगे. पानी कहाँ से आता है? नल से आता है, बच्चे बोलते हैं. नल के माध्यम से आता है, नल से पानी नहीं आता है. This nal is not a source of water. People tap the source of water and the authority and they send it by the water pipe.
so then water will not be wasted. और कुआं खोदने से नीचे पानी है. If I say water, then the small child will say bathroom or toilet or kitchen. Do you understand this? और जिसके Yes, ma'am. खींचा है गाड़ी में, ऐसे ही जब हम कहते हैं how do we do this thing? Industrialization with the growth of factory industry. All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. फैक्ट्री इंडस्ट्री, देखो फैक्ट्री और इंडस्ट्री दोनों रखा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं कुछ एनसीईआरटी का पढ़ रही थी, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेंडर जल्दी, मेरा टाइम हो गया, दूसरा क्लास है. एक्सप्लेन द मीनिंग, व्हाट इज द, ओके आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? कैन यू एक्सप्लेन? यू हैव टू गिव मी दिस आंसर आफ्टरवर्ड्स. क्यों? अभी मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकती, तो इसीलिए मुझे ये आंसर अब देना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? आज तक मैं भी गलत फहमी में थी कि एक ही चीज है, बट इट इज नॉट एक चीज. इसको याद रखो, कहीं से भी ढूंढो और मुझे बताओ. साईराम बच्चों, बाय. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. इतना जल्दी क्यों? बाय बच्चों. मैम मैं यही हूँ. Ma'am चली गई पोपट.